Today I am discussing the self-confidence topic. So how we will build up the self-confidence. First we are discussing what do you mean by the self-confidence. Now self-confidence means having a trust in one's own judgment and the ability. That is the self-confidence. Believe in yourself. So self-confidence people have three main attributes. One is belief in one's own capability. Second one is ready to accept any challenge. Third one is willingness to take risk. So people who have a self-confidence that have a three main attribute. First is belief in one's own ability, means belief in yourself. Second one is ready to accept any challenges. Any challenge he or she can accept, that is the second attribute. And the third one is willingness to take the risk, means they can able to take the risk if they have the self confidence. So this is the self confidence. Now what are the factors that influencing the self confidence? Many factors influence our beliefs about our capabilities. There are three main factors that influence self confidence. First one is the social factor, second one is the cultural factor, and the third one is the physical factor. Let us discuss first social factor. Now what is the social factor? Society plays an critical role in shaping and building our self confidence. So our society comprises our family, our friends, relatives, schools, neighborhood, even strangers. So our initial interaction with the society leave a lasting impact on our attitude and outlook towards ourselves. So evolution from the parents, teachers, schoolmates, and the friends can affect the way how we perceive ourselves, which then progressively build up our self-confidence. For example, the parent and the child relationship. Okay, so the attitude of the parent toward their child creates the first significant impact on him or her, especially in his initial year of the life. So for example, lack of love and the attention, harsh physical and mental punishment remarks the child mistake can break his confidence. On the other hand, the overprotective parent क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे उनको फील ही नहीं करने देते पेन क्या है, स्ट्रगल का क्या है, तो वो न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए वो कैपेबल नहीं होते ऐसे चाइल्ड्स. ठीक है, सो ही मे कम टू बिलीव दैट ही इज इनकेपेबल और inadequate. So therefore a balanced approach of the parenting is necessary to build a child confidence. तो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, मतलब प्यार भी दो, पनिशमेंट भी दो, बट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो मत करो. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द सोशल फैक्टर. Now second one is the cultural factor. Now culture refers to the characteristics of the particular society, community or ethnic group reflected in its practices and beliefs. For example, some culture are the value independence, individuality, self esteem, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो खुद ही करना चाहते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, वैसे लोग. चिल्ड्रन फ्रॉम सच अ कल्चर आर आउट गोइंग, ईगरली एक्सप्लोर द न्यू सिचुएशन एंड हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इस टाइप का जो भी कल्चर है जिसमें इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है, इंडिविजुअलिटी है कि वो खुद ही को करना है सब कुछ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो वैसे चिल्ड्रंस न्यू सिचुएशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. तो ऐसे चिल्ड्रंस में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है. नाउ ऑन द अदर हैंड सम कल्चर्स ऑनर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रिलेशंस एंड ओबीडियंस. ऑनर ट्रेडिशनल वैल्यू मतलब ये कल्चर के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंसी मतलब हमारे लिए तो ये है ही नहीं. ऐसे जो बच्चे होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते सेल्फ कॉन्फिडेंस. उनका क्या होता है, हमेशा से डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब विथ टेकिंग अ हेल्प दे कैन बिल्ड देयर सक्सेस. सो दिस आर द कल्चर फैक्टर्स. Now last one is the physical factor. Now physical factor like healthy physique,
healthy mind, good appearance play an important role in developing the self-confidence. In every culture, good looks are always appreciated and admired, which affect a person's self-confidence. Physical disabled people instill a sense of dependency in an individual. For example ऐसी people है जो फिजिकली डिसेबल है और सफ़र कर रहे हैं कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन से, तो उनमें लो कॉन्फिडेंस की मात्रा ज़्यादा होती है. बट जैसे अदर पीपल है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पीपल है, स्ट्रॉन्ग पीपल है, वो हेल्प करते हैं डिसेबल्ड पर्सन को और ओवरकम करते हैं उनकी फिजिकल लिमिटेशंस एंड मोटिवेट करते हैं उनको टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. For example, Nicholas Vujicic is an excellent example of the success through positivity and perseverance despite being born without the arms and the legs. Nicholas Vujicic, that is the founder of the Life Without Limbs international non-profit organization. He doesn't have the arms and the legs, but he has a confidence. That's why he has developed the organization. Okay, so these are the factors which affect the self confidence. Thank you for watching a video. This is the part 1 video. In the next part we will discuss various attitude of the people.